पर ग्लैमर एंड शोबिज इंडस्ट्री के जितने राज आपको सामने नजर आते हैं उससे कई ज्यादा राज ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं बंद पर्दों के पीछे। कितनी बार खबरें आती हैं कि नामचीन सेलिब्रिटीज आपस में बात करना बंद कर दिए हैं। कितनी बार पता चलता है किसी पॉपुलर मूवी से बिल्कुल एंडिंग मोमेंट पे एक्टर्स को बदल दिया जाता है या फिर कुछ एक्टर्स मूवी को क्विट कर देते हैं बिल्कुल मिड ऑफ द शूट में, लेकिन उसके पीछे की वजह अक्सर बाहर नहीं आ पाती है। और ऐसे ही कुछ हुआ था रिसेंटली जब धर्मा प्रोडक्शन ने एक स्टेटमेंट इशू किया कार्तिक आर्यन के बारे में, जिनके बारे में काफी बातें चल रही थी और वो दोस्ताना 2 का हिस्सा थे, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडिंग हिस्सा ऑफ दोस्ताना 2। और ये खबर जब बाहर आई कि अब कार्तिक आर्यन दोस्ताना का हिस्सा नहीं होंगे और उस मूवी में नहीं नजर आने वाले हैं, तो कार्तिक के फैंस काफी दंग रह गए, क्योंकि इसके साथ साथ आई खबर ये कहने की कि कार्तिक के उस मूवी का हिस्सा ना होने का बड़ा कारण है उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर। और कार्तिक के फैंस इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड थे बिकॉज वो इस बात को सच नहीं मानना चाहते थे। इतने दिनों से हम सब जानना चाहते हैं कि क्या थी असली वजह कार्तिक और धर्मा के फॉल आउट की, क्या बनी वो मेजर कारण जिसके कारण कि आज कार्तिक आर्यन दोस्ताना 2 जैसी मूवी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है हम सबके इन थॉट्स पे, हम सबके इन सवालों पे एक फुल स्टॉप लगने वाला है, बिकॉज एक करीबी सोर्स ने किया है एक बड़ा खुलासा इस पूरे फियास्को के बारे में। करण जौहर and Kartik Aryan recently have parted ways after the much anticipated movie Dostana 2 actually came into limelight. Well, the actor-director parting ways out of nowhere raised quite the eyebrows on them and gave birth to innumerable speculations, making it one of the most biggest controversial fallouts of the year 2021 so far. Well, लेकिन तब से लेके अब तक सोशल मीडिया पे अक्सर हमें खबरें मिलती हैं कि क्या हो सकता है कारण about actually this being a major fallout, जहाँ एक तरफ काफी सारे लोग करण को ब्लेम करते हैं for as usual his nepotism promotion, the rest have been blaming Karthik for his tantrums and also for his unprofessional behavior, जिसके कारण उनके काम का काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनके कारण उनका ब्रेकअप हुआ वो जानवी कपूर। वो कहते हैं कि शायद यही बना कारण उनके काम चले जाने का। लेकिन अब एक लीडिंग पोर्टल की खबर के अनुसार द रियल रीजन बिहाइंड करण जौहर एक्चुअली swearing for never working with Karthik Aryan and their major fallout is something pretty different. Well, एक insider was seen quoted by the entertainment portal that said Karthik Aryan had come on board of Dostana in 2019 for a minimum amount of 2 to 3 crores, and at the present his market value is upside of 10 crores. At first he asked Karan for a hike in his acting fees midway as his market value had gone big time up in the last 2 years. While Karan believed it was unprofessional on Karthik's part to renegotiate the remuneration midway, he tried to compensate him with another film, Mr. Lele. Karthik also agreed to come on board and said that yes, and was all charged up for a quirky ride. But to all his surprise, he found himself replaced all of a sudden by Vicky Kaushal without being notified. Karthik was also upset with Dharma Production when they gave Shashank Khaitan Yodha to Shahid Kapoor. Although Shahid soon quit the movie, but then that role was never given to Karthik as he was never approached for the role. Later आपको बता देते हैं Karthik was offered yet another film, a cricket story that was directed by Sharan Sharma of Gunjan Saxena's fame. Well, to avoid being dropped out of the film, Karthik asked Karan to execute and sign a contract with him. और यही insider इसी खबर को आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं Meanwhile, Karthik continued giving reasons of COVID-19 pandemic to not start shooting for Dostana 2, and Karan did not really push him much either given their relationship. When he shot for Dhamaka, Karan was super upset. They had an indoor meeting where Karan expressed his disappointment. Karthik was clear he wouldn't shoot for Dostana till he signed Sharan's next and apparently told Karan, I will shoot for Dostana only after you sign the contract for Sharan Sharma's next. Karan felt there was a total lack of trust and could not commit to the film until the script and screenplay were completely locked. Meanwhile, Karan decided to go ahead and start the shoot for Mr. Lele with Vicky Kaushal and Janvi Kapoor from April itself. The moment Karthik got to know about this development, he informed Dharma Production that the only dates available for Dostana this year was April onwards. Karan understood that Karthik here was doing and quickly reprimanded him from the same. He was genuinely upset with Karthik as Janvi had to pick between Dostana 2 and Mr. Lele. इसी पूरे फियास्को के बाद Karan and Karthik stopped speaking to one another. While the source yet continues saying, Karan felt it was quite unprofessional on Karthik's end to arm twist, and this finally led to the big fallout between the two of them, with things going pretty ugly. Karthik, on the other hand, felt that he was horribly unpaid for the job as he was definitely the biggest selling point of the film, and Karan was not keeping up his promise for a second film. Karthik also developed some issues with Janvi Kapoor due to their breakup, and it all culminated into a big major fight with money like always coming into the center. All issues might have been resolved, but unprofessionalism took things to a different tangent, and Karan was left with no choice but to oust him from the film Dostana 2 itself. well, आपको बता देते हैं कि ये तो थी सिक्के का वो पहलू जो एक अंदरूनी सोच शेयर करते हुए रिवील करते हैं लीडिंग पोर्टल को, लेकिन इसकी सच्चाई और इसकी पुष्टि सिर्फ करण और कार्तिक कर सकते हैं। एंड वेल, ये दो कलाकार इस बारे में खुलकर बात करने के लिए बाहर नहीं आएंगे। दोस्ताना 2 will now be made with new actors joining Janvi Kapoor
Kapoor and Lakshya. Well, we can only wish good luck to the cast of Dostana 2 for this new venture. लेकिन आप हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में इस बड़ी कंट्रोवर्सी या ये कहें शोबिज़ इंडस्ट्री की इस बड़ी गॉसिप के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर शेयर करिएगा. Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.